Good morning, students. In our last class, we have seen the values of trigonometric functions at allied angles. What are the allied angles of x? That is minus x, pi by 2, plus or minus x, pi plus or minus x, 3 pi by 2 plus or minus x, right? Similarly, 2 pi plus or minus x and etc. So, at those angles we have found the values of trigonometric functions. So, today we will see values of trigonometric functions at sum or difference of angles. So, what is the meaning of sum or difference of angles? Suppose we have two angles, suppose one is A and another one is B. So, sum means what? That is addition of these two angles. So, our aim is to find the trigonometric functions at this particular angle. That means we have to find sine of A plus B as well as cos of A plus B as well as tan of A plus B, likewise cot of A plus B as well as sec of A plus B and cosec of A plus B. So, the main thing is finding what? Sum of two angles, trigonometric ratios or trigonometric functions of sum of two angles, right? So, if we are able to find these three, then other three can be easily be found, right? So, similarly, what is the difference of angles? Suppose we have two angles, that is A as well as B. So, difference means what? Either A minus B or B minus A, right? So, I will consider here A minus B. So, for this particular angle also we have to find the values of 6 trigonometric functions. That means our aim is to find sine of A minus B as well as cos of A minus B as well as tangent of A minus B, right? So, tangent of A minus B. If we are able to find these three trigonometric ratios, then other three trigonometric ratios can be easily found. Just they are the reciprocals of these three. That is, cot of A minus B is equal to what? 1 divided by tan of A minus B. Similarly, sec of A minus B means 1 divided by cos of A minus B. Similarly, cosec of A minus B can be written as 1 divided by sine of A minus B. So, clearly we got the meaning of values of trigonometry functions at sum or difference of angles. So, I have written this heading, and what is the meaning of this particular heading we know here, right? So, at first we will find cosine of difference and sum of two numbers. Sum of two numbers are two angles, right? Here angles are given in radian, they are also what? Numbers, right? So, here I have given the heading, that is cosine of difference and sum of two numbers. So, what is the result here? See here, this is, I will give one theorem, right? One theorem for any two numbers, otherwise you can also write for any two angles also, right? For any two numbers A and B, for any two numbers A and B, prove that first one is
cos of a minus b, cos of a minus b is equal to cos a cos b. Here minus is present, so here plus will be there, right? Cos a cos b plus sin a sin b, right? So this is one very important formula, we have to derive this one, right? And another one we have to write, that is cos of a plus b is equal to same thing, cos a cos b. Here plus is present, so here it will be minus sin a sin b, sin a sin b, right? So see here, this is one theorem. Here I will write this is theorem 1, right? This is theorem 1. Here I will write this is what? Theorem 1, right? So in this particular theorem, what we have written, for any two numbers a and b, prove that cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b, and cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. So for this particular purpose, we have to consider a unit circle only, right? So our aim is to prove this one. See here. So for this purpose, we have to consider the coordinate system. So what is the coordinate system? Clearly the coordinate system consists of what? Two mutually perpendicular lines. They are intersecting at a point called origin, right? So they are nothing but our x-axis and y-axis. See here. And after that, we have to consider a unit circle such that its center is at origin. So for that purpose, I will consider a circle here. See here, I have considered a circle, right? This is our x-axis and this is y-axis. So I will give, this is what? X dash, and this is origin O, and this is x, right? Similarly, I will give, this is y, this is y O, and this is what? Y dash. That means clearly see here, x dash O x as well as y O y dash. These are called what? This is x-axis and this is y-axis. Both are combinedly called what? Coordinate axes, ax, es, right? And they are intersecting each other at origin and they are mutually perpendicular. That means देखा बेले ए दीड जा कौन है परस्पर को 90 डिग्री एंगल रे इंटरसेक्ट करथिबे हला. सो एति हला परे बेले हमें कौन करिया देखो. सपोज since we have considered this is a unit circle, suppose it will intersect x at point what? P0, and its coordinates are what? 1, 0, right? So after that आमे कौन करिया बेले तीनटा पॉइंट कंसीडर करिया कौन कौन? P1, P2, P3. देख बेले सपोज मु कौन करिबी इठी P1 गोटे पॉइंट कंसीडर करिबी, राइट? सपोज दिस इज P1, राइट? सो P1 कौन है बेले देख P1 टा किछि नहीं XO देख बेले. Suppose I will consider 3 points, that is P1, P2, P3 such that angle XOP1 is equal to A बेले. तार अर्थ देख ये जो एंगल अच्छी पिले एंगल XOP1 एटा हेथियो कोन पिला हमर एंगल A. बुझेला? दिस इज आवर एंगल A.
नेक्स्ट देख बिले सच दैट एंगल एक्स ओ P2 जो थी बिले आपको कौन करिया आमे एंगल बी कंसीडर करिया कहीं देख बिले आमे कौन करछे फॉर एनी टू नंबर ए एंड बी कंसीडर करछे ए जो एटा बिले ए पर्टिकुलर एंगल रो मेजर हेथिबो ये जो बी अछि बिले एंगल एक्सओ P2 रो मेजर हेथिबो हला सो देख सपोज एठी मु पॉइंट P2 कंसीडर कर दे बिले एठी पॉइंट P2 कंसीडर करले सो कौन हेथिबो बिले देख ये एठी में जॉइन हेथिबो ना सो ए जो मेजर अछि बिले एटा कौन होइथिबो वर्तमान देख ये हला हमरो बी ये हला एंगल ए ये हला एंगल बी बिले सो नेक्स्ट काम कौन बिले देख ए जो इठी फिगर रे देख बिले क्लियरली हमो जना पड़छि एंगल एटा बड़ अछि एंगल बीटा छोट अछि बिले हला सो ए माइनस बी केमिति आसीबो देख बिले सो एठी देख पूरा रोटेट हला ना बिले एमिति रोटेट हला केता आसिला एंगल ए आसिला ए जो अमाउंट बी अछि बिले सेति जदी हमें पछु को जिबा हला पछु गले मे बी एठी आसी पारे जोठी भी आसीबो हला तमे जोठी भी नै परियो बिले क्लियर सपोज दैट पॉइंट इज नथिंग बट P3 टा मु एठी कंसीडर कर देबी सपोज राइट तमे भाबियो एटा छोट ही अछि एठी आसीबो जोठी आसु किछि प्रॉब्लम नै हला मे बी एंगल बी एठी भी के नै थाइ पारे ताको धरि के हमें कोन कले सपोज P3 टा मु एठी कंसीडर करले सो नाउ आई गॉट this is so here this is angle what a minus b this is angle a minus b so बर्तमान काम कौन बोले ए जो पर्टिकुलर एंगल को लेकिन आम कौन करिया cos of a minus b फाइंड आउट करिया बोले सो अगेन प्रीवियसली आम कौन जना अछि बोले गोटे यूनिट सर्किल आम कंसीडर कले हला पॉइंट P कंसीडर कले सपोज एंगल एक्सओ P1 केते हला बोले एंगल ए हला सो P1 पॉइंट रो कोऑर्डिनेट कौन बोले क्लियरली आम जानिचे दिस इज व्हाट cos a sin a एटा आम प्रीवियसली पढ़ीचे पिला ऑलरेडी हला सो P2 पॉइंट रो कोऑर्डिनेट्स केते हबो क्लियरली दिस इज cos b sin b किछ नै पिले एटा रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रासि पिले एठी हमें कोन जनरल लिखछे x y लिखछे पिले हला x इज इक्वल टू कोन r cos थीटा y इज इक्वल टू r sin थीटा सेठरो मध्ये हमें लिखि परिबा किछ असुविधा नै सो ए जो पॉइंट P3 अछि पिले r कोऑर्डिनेट ता केता हो को क्लियरली इट इज cos ऑफ a minus b ये हबो sin ऑफ a minus b cos of a minus b और sin of a minus b हबो पिले राइट सो देखो एति सरला पिले वर्तमान काम कोन देखो पिले भल से देख पिले आम गोटे छोट थियोरम पढ़ीचे पिले प्रीवियसली तुम 10th क्लास रे पढ़ी थी सपोज इटा गोटे सर्किल बिले राइट है सर्किल रे ये है सेंटर है जदि ये गोटे कॉर्ड अच्छी बिले ये आउ गोटे कॉर्ड अच्छी राइट जदि ये दुटा कॉर्ड लेंथ जदि सेम है क्लियरली इट विल क्रिएट सेम एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल सो ए एंगल आउ ए एंगल सेम हम बोले राइट जदि ए दुटा एंगल सेम है क्लियरली ए कॉर्ड जगह कौन हो बाध्य सेम थी सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिजल्ट क्लियरली देख पे फिगर को भलसे देख ये जो फिगर अच्छे ए पर्टिकुलर एंगलटा केते पिले ए माइनस बी ए पर्टिकुलर एंगल केते ए माइनस बी अगेन आउ गोटे कथा देख पिले ए जो एंगल अच्छी एक्स ओ P1 बिले ये जो एंगल अच्छे कहते एक्स ओ P1 ये जो एक्स ओ P1 रो आम कौन करिया बी टा को जदि काट दवा बिले एटा काट दियो सो ए एंगलटा केते हो बिले क्लियरली देखो ए एंगलटा मध्ये हमर कोन ए माइनस बी कि नहीं देखो भल से देखो एठी देखो बिले सो क्लियरली सी हियर एंगल भल से देखा पहले एंगल
एक्स ओ पी थ्री एंगल एक्स ओ पी थ्री इज इक्वल टू केते बिले ए माइनस बी जोटा कि आम ऑलरेडी जानीचे बिले कहीं रोटेट है ए पछू माइनस बी गला सो क्लीयरली दिस इज एंगल ए माइनस बी एगेन भल से देख एक्स ओ पी वन देख पे ए पूराटा हूँ एंगल ए राइट है से आम कौन कले ए बी टा को माइनस करदे सो दैट पी ओ पी टू नॉट पी दैट इज पी वन ओ पी टू सो एंगल पी वन ओ पी टू है दैट इज आल्सो एंगल ए माइनस बी सो देख बिले ए दीटा एंगल जदि कौन है सेम है बिले सो आर करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड गुड़ाकर लेंथ कौन हम क्लीयरली इक्वल हम कौन हम क्लीयरली इक्वल तार अर्थ कौन बिले देख ये जो एंगल पी जीरो वो पी थ्री आर करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन बिले पी जीरो पी थ्री कॉर्ड है पी जीरो पी थ्री ए पी वन वो पी टू रो करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन है बिले पी वन पी टू सो ये आमको फॉर्मूला मिल जाए बिले राइट सो देख बर्तमान काम कौन देख सो क्लीयरली मु बर्तमान तुमको थ्योरी ये किसी लिखे बिले डायरेक्ट फर्मूलाटा केमी आसो से कहीदेवी प्लस बुक रु तुमको पिक्चर पठेदेवी तुम से देखिए खातार लिख है सो ये देख बिले क्लीयरली मु डायरेक्ट लिखी दूसरी क्लीयरली एंगल एक्सओ पी थ्री एक्सओ पी थ्री इज इक्वल टू एंगल केते बिले पी वन ओ पी टू सो ये आमको कौन मिलला बिले दैट इम्प्लाइज कॉड कॉड पी जीरो पी थ्री इज इक्वल टू कॉड केते बिले कॉड पी वन पी टू कॉड पी वन पी टू सो बर्तमान देख बिले सो आर लेंथ पी जीरो पी थ्री लेंथटा कौन है पी वन पी टू लेंथ सहित सामान है सो पी जीरो पी थ्री लेंथ फॉर्मूला आम एप्लाय करिया बिले कौन फॉर्मूला देख सो बर्तमान देख बिले सपोज तुम पाखे गोटे लाइन सेगमेंट अच्छी बिले है कौन अच्छे लाइन सेगमेंट है भल से देख सपोज लाइन सेगमेंट ये है पॉइंट पी एंड पॉइंट ये है पॉइंट क्यू बिले है सो आर कोऑर्डिनेट्स अच्छी केते बिले x1 x2 और x1 y1 लिख बिले राइट दिस इज x1 y1 राइट एंड आर कोऑर्डिनेट्स अच्छी कौन बिले x2 y2 सो जिते आमको कौन दरकार बिले ए पर्टिकुलर लाइन रो लेंथ दरकार बिले तापे फॉर्मूला कौन बिले x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस केते बिले y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट ओवर हो पार ना सो ए पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट लेंथ फाइंड आउट करने हेले सो आम ये कौन लिख पार पी क्यू इज इक्वल टू दिस मच सो ए पर्टिकुलर फॉर्मूला आम एप्लाय करिया बिल है सो यहाँ ऑलरेडी तुम पढ़ी थी स्थानांक जियोमेट्री जो थी तुम 10th ना 9th क्लास रे पढ़ी सो बर्तमान काम कौन बिले कॉड पी जीरो पी थ्री देख यहीटा है बिले आमर x1 y1 ये है x2 y2 सो आप फॉर्मूला कौन बिले कहल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये केते अछि को cos ऑफ a माइनस b माइनस 1 देख बिले x2 माइनस x1 cos ऑफ a माइनस b माइनस 1 आर कौन करिया बिले ए पर्टिकुलर क्वांटिटी रो होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी है माइनस 0 रो होल स्क्वायर राइट आर कौन हम बिले रूट ओवर हम कि नहीं क्लीयरली आर रूट ओवर दैट इज इक्वल टू p1 p2 भल से देख बिले ये जो p1 है cos ए sin ए ये है के p2 रो कोऑर्डिनेट के cos b sin b एटा भाबी दो x1 y1 ये है x2 y2 बिले राइट सो क्लीयरली आम के लिख पार cos b माइनस cos a होल स्क्वायर प्लस के पिले sin b माइनस sin a होल स्क्वायर रूट ओवर
है। सो देख पे बर्तमान आम कौन करवा बोथ साइड स्क्वेरिंग करदे बेले कौन करवा बोथ साइड स्क्वेरिंग कले कौन हम रूट ओवर उठे जीव। सो दिस इम्प्लाइज केत हम को कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस ये देख बेले ये तो साइन ऑफ a माइनस बी माइनस 0 अच्छी क्लीयरली दिस इज व्हाट आम लिखिदबा साइन स्क्वेयर a माइनस बी साइन स्क्वेयर a माइनस बी लिखिदेली दैट इज इक्वल टू ये कौन हम कह पे ये है कॉस b माइनस कॉस a होल स्क्वेयर प्लस ये हम कहते पे साइन b माइनस साइन a होल स्क्वेयर। क्लीयर आइडिया है। बर्तमान देख पे मु ये जो ऊपर जाक सब लिभे दूसरी पे ए फर्मूला भी लिभे देवी कहीं स्पेस ना है। सो देख कौन हो थियोरम स्टेटमेंट भी लिभे दूसरी देख बर्तमान काम कौन बोले देख। सो ये कौन है बोले देख ये है a माइनस बी होल स्क्वेयर फर्मूला में अप्लाई करवा ये भी a माइनस बी होल स्क्वेयर ये भी a माइनस बी होल स्क्वेयर फर्मूला में अप्लाई करवा। सो कौन हो देख पे सो ये देख a माइनस बी होल स्क्वेयर फर्मूला अप्लाई कले क्लीयरली केत हम पे कॉस स्क्वेयर a माइनस बी। सो ये कौन है पे a स्क्वेयर माइनस 2 कॉस ये है कहते a माइनस बी देन प्लस 1 स्क्वेयर दैट इज 1 है प्लस साइन स्क्वेयर a माइनस बी राइट। सो दिस इज इक्वल टू बर्तमान देख पे यू आस ये कॉस बी माइनस कॉस ए होल स्क्वेयर प्लस साइन बी माइनस साइन ए होल स्क्वेयर अच्छी। सो ये भी जदि आम a माइनस बी होल स्क्वेयर फर्मूला पका ये है कहते कॉस स्क्वेयर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस ये लगाते बोले कॉस स्क्वेयर ए प्लस एट देखो पहले साइन बी माइनस साइन ए होल स्क्वेयर ये लगाते साइन स्क्वेयर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी प्लस ये है साइन स्क्वेयर ए। सो भल से देख पे सो क्लीयरली ये देख पे ये है कॉस स्क्वेयर थीटा ये है साइन स्क्वेयर थीटा आम क्लीयरली जाने पाइथागोरियन आइडेंटिटीज रु कौन पे कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 क्लीयरली आम जाने पे। सो बर्तमान काम कौन पे ये जो दीटा टर्म अच्छी एटा आईटा बदल मुझे पके 1 पकेबी प्लस ए जो 1 अच्छी क्लीयरली मुझे आप 1 पकड़ी पे कॉस स्क्वेयर ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वेयर ए माइनस बी राइट प्लस ए 1 टा लिखिदेवी है माइनस 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी राइट। सो दिस इज इक्वल टू अगेन इट हुआ सब ये जो कॉस स्क्वेयर बी अच्छी पे है ये जो साइन स्क्वेयर बी अच्छी आप फॉर्मूला कौन पे क्लीयरली 1 कॉस स्क्वेयर बी प्लस साइन स्क्वेयर बी क्लीयरली साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 पे अगेन देख पे ये कॉस स्क्वेयर ए अच्छी ये साइन स्क्वेयर ए अच्छी पे। सो देख कॉस स्क्वेयर बी प्लस साइन स्क्वेयर बी के क्लीयरली 1 है प्लस ये जो साइन स्क्वेयर बी कॉस स्क्वेयर बी 1 है कॉस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर अगेन 1। सो मुझे आउ गोटे 1 लिखिली माइनस माइनस देख पे जो 2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी अच्छी आई कौन करवा माइनस 2 मु कमन नहीं सो रहा के कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी। सो भल से देख पे सो क्लीयरली दिस इज इक्वल टू ये कहता पे 2 माइनस 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ये कहता होगा पे 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 ये है कहते
cos A cos B प्लस ये है sin A sin B राइट। सो देख बिले ये कौन हम ये जो बोथ साइड में -2 ऐड करिया ना ए दुटा सेम अच्छे बोले कैंसल होगा। सो रहा के -2 cos of A minus B इज इक्वल टू A2 कौन हम बोले कैंसल हो राइट। अदरवाइज तुम कौन कर यहाँ एपट ने -2 हम कटिज बोले है। सो ये है के -2 इंटू cos A cos B प्लस ये है के sin A sin B। सो भल से देख पिले बर्तमान कौन करिया बोथ साइड आम -2 डिवाइड करदे पिले एपट -2 डिवाइड करी एपट -2 डिवाइड कले कौन आसो आमको मिलगला पिले cos of A minus B इज इक्वल टू केते पिले cos A cos B प्लस ये है के पिले sin A sin B है। सो बर्तमान आमको कौन मिलला पिले बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑलरेडी ये तुम जानिच पिले है 10th लेवल रे पढ़ीच है। सो फॉर्मूला मिलला पिले cos of A minus B इज इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B। सो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला प्रूफ करने आम फास्ट कौन कंसीडर कले पिले फर्स्ट ऑफ ऑल आम कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कले दैट इज x डैश वो x एज वेल एज y वो y डैश दीटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन आम कंसीडर कले। तापर कौन कले ये जो ओरिजिन अच्छी ओरिजिन रे सेंटर थिला बेले आम कौन कले यूनिट सर्किल गोटे कंसीडर कले। यूनिट सर्किल कंसीडर कला परे से सर्किल उपरे कौन कले तीन पॉइंट आम चूज कले कौन P1 P2 P3 सच दैट x ओ P1 कौन है A है आउ x ओ P2 है बिले B है एंड x ओ P3 कौन है बिले A माइनस B है। सो आफ्टर दैट देख बिले क्लीयरली एंगल एक्स ओ P3 कौन पिले एक्स ओ P3 रो मेजरटा के A माइनस B अच्छी पिले एगेन भल से देख ए होल एंगलटा कौन पिले ए P ओ P1 और एक्स ओ P1 टा कौन पिले ए तार मेजर है ए पिले से आम कौन करवा जदि बी टा काटिदेवा P ओ P1 जो अच्छी से बी काटिदे P1 ओ P2 कौन हम क्लीयरली ए रु बी पड़े तार तो कौन A माइनस B है। सो बर्तमान देख ए एंगल मध्य कौन है A माइनस B ए एंगल भी A माइनस B। सो सर्किल रो सेंटर रे सेम एंगल जदि क्रिएट करिवो तार करस्पोंडिंग कॉर्ड रो लेंथ सेम थिबो बेले सो कौन हम P1 P2 रो लेंथ जहाँ थिबो P0 P3 रो लेंथ सेम थिबो सेटा एठी लिखा है कॉर्ड P0 P3 इज इक्वल टू कॉर्ड P1 P2। आफ्टर दैट आम कौन गले डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला पकेले बेले फॉर्मूला क्लियरली वी नो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला देख बिले जदि आम पार गोटे लाइन सेगमेंट अच्छी तार एंड पॉइंट रो कोऑर्डिनेट्स जदि दिया हिथिबो x1 y1 एंड x2 y2 देन डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट और वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट ओवर। सो से पर्टिकुलर फॉर्मूला ये एप्लाई होइछि पिले है। सो ए फॉर्मूला एप्लाई है देन आफ्टर दैट वी हैव स्क्वेयर्ड both side so that this particular root over is eliminated. After that we have used A minus B whole square formula here also A minus B whole square, here also A minus B whole square. Again we have used sin square theta plus cos square theta is equal to one formula and we got the very important formula that is cos of A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B right। इवन देख बिले तुम कौन कर एंगल A ग्रेटर देन एंगल बी नहीं कर सिमिलरली तुम एंगल ए टा को छोट करी एंगल बी टा को बड़ कर तार फिगर बुक अच्छे बोले से तुमको सेंड करदेवी क्लीयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला दैट इज cos of A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B। So next we will go for the another formula that is cos of A plus B। So this is very simple, see here। So to obtain the formula cos of A plus B we have to use this particular formula only, that is cos of A minus B right। So
So second one, we will go for the second formula. See here, we have I am writing here cos of a plus b, right? Cos of a plus b. See here, so clearly this can be written as cos of a minus of minus b. So I can write a plus b as a minus of minus b, so that here we got cos of a minus b formula, right? So this can be written as cos a cos of minus b, right? So what is the formula here? Cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. So clearly this is plus sin a sin of minus b, right? So this is equal to, again we know that the formula, that is cos of minus theta is equal to cos theta. So clearly this is equal to cos b plus, here it is sin a, right? Sin of minus b is equal to minus sin b, right? So here we have to write sin of minus theta is equal to how much? Minus sin theta. Cos of minus theta is equal to how much? Clearly cos theta, right? So using this particular formula, I have written cos of minus b is equal to cos b and sin of minus b is equal to minus sin b. So this is equal to, we can write cos a cos b minus sin a sin b. So clearly we got two very important formula, that is cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b, and the second one is cos of a plus b is equal to how much? Cos a cos b minus sin a sin b, right? So these are two very important formula, right? So this is all about what? Cosine of, this is all about cosine of difference and sum of two angles. So here we got cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b, and cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b, and cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin. Next we will see the sine of difference and sum of two angles. See here, so to obtain the sine of difference and sum of two angle, here I have given another theorem, that is for any two numbers a and b, prove that sine of a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b, and sine of a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. So to prove this one, we will use the previous formula. See here, we have sine of a minus b. So I will write this expression in the form of cos. So clearly we know the formula, that is cos of pi by 2 minus theta. So here theta is what? A minus b, right? So this can be written as cos of pi by 2 minus a plus b. See here, I will take this is as a and this is b. So cos of a plus b formula we have to use here. So this is equal to cos pi by 2 minus a cos b, that is equal to cos b minus sin
A means what? Pi by 2 minus A and sine B, right? So clearly cos pi by 2 minus A, we know the formula, that is equal to sine A, this is cos B minus sine pi by 2 minus A, clearly cos A, and this is sine B. So clearly we got the formula, that is sine of A minus B is equal to sine A cos B minus cos A sine B. So clearly this is the first one, right? Similarly we will do the second one. See here, I will do the second proof. This is number 2. Clearly we have sine of A plus B. देख बोले जो साइन ऑफ ए प्लस बी अच्छी आपको आम इन टर्म्स ऑफ कोसाइन लिखा बोले सो कौन हम को सो दिस इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी. देख बोले जो ब्रैकेट अच्छे भितर अच्छे है यहाँ उठेले कौन हम को दिस विल बी कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी. भलसे देख पे सो ये आम कौन करिए जो पाई बाई 2 माइनस ए को ब्रैकेट पकई दूचे. क्लीयरली इट इज पॉसिबल. सो बर्तमान कॉस ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूला हम पकेबा, राइट? सो कॉस ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूला कौन पे सो दिस इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस ए कॉस बी ये माइनस थे कौन पे प्लस आसो है साइन ए मान के पाई बाई 2 माइनस ए साइन बी, राइट? सो कॉस 90 माइनस थीटा बा कॉस पाई बाई 2 माइनस ए, क्लियरली इट इज व्हाट साइन ए, दिस इज कॉस बी प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस ए, क्लियरली दिस इज cos A, this is sin B. So here we got the formula sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. So देखो पिला में प्रीवियसली कौन गले cos A minus B फॉर्मूला cos A plus B फॉर्मूला पढ़िले है cos A माइनस बी को यूज करी cos A plus B बाहर कर देले पिले प्लस से प्रीवियस दीटा फॉर्मूला को यूज करी हमें sin A माइनस बी और sin A plus B मध्य फाइंड आउट कर देले. सो दिस इज ऑल अबाउट साइन ऑफ एज वेल एज कोसाइन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स. इवन एटा मध्य हमें कंपाउंड एंगल फॉर्मूलास बोली मध्य कहि परिबा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास. थैंक यू.